Hello friends, welcome back to your YouTube channel Alig Academy. यह मॉक टेस्ट 10 फॉर AMU Law Entrance Exam 2026 to 27 सेशन 9 मॉक टेस्ट ऑलरेडी अपलोडेड हैं, आप जाके देख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। और टेलीग्राम द अलीग अकेडमी पे जाके भी आप PDF फाइंड कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे एक पैसेज दिया गया है, उसे आपको पढ़ के क्वेश्चन 1 से लेकर 10 तक आंसर देने। व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज? इसका ऑप्शन करेक्ट होगा बी, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट इन लीगल सिस्टम्स। क्वेश्चन 2, व्हाट डज द टर्म स्टेट डिसाइसिस मीन? इसका ऑप्शन करेक्ट होगा बी, टू स्टैंड बाय डिसाइडेड केसेस। व्हाट इज द अपोजिट ऑफ द वर्ड एनालॉगस इन द पैसेज? इसका ऑप्शन करेक्ट होगा बी, सिमिलर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंटोनिम ऑफ रिजिड? इसका ऑप्शन करेक्ट होगा सी, फ्लेक्सिबल। विच वर्ड इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू एक्सीजेंसीज? इसका ऑप्शन करेक्ट होगा बी, अर्जेंट नीड्स। Which idiom West conveys to strictly follow established rule without question, followed to the letter? One word substitution for a judgment that serves as an example for future cases. इसका ऑप्शन करेक्ट होगा बी, precedent. According to the passage, what is the risk of excessive deviation from precedent? इसका ऑप्शन करेक्ट होगा legal uncertainty and lack of coherence. What message does the passage convey about the doctrine of precedent? इसका ऑप्शन करेक्ट होगा it must balance stability and adaptability. The tone of the passage is best described as? इसका ऑप्शन भी करेक्ट होगा dispassionate critic. Choose the synonym of execrable. इसका ऑप्शन करेक्ट होगा बी, detestable. Choose the antonym of recalcitrant. इसका ऑप्शन करेक्ट होगा बी, obedient. One word substitution for a statement that contradicts itself. इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ए, paradox. Choose the meaning of the idiom ride roughshod over. इसका ऑप्शन करेक्ट होगा टू ट्रीट अदर्स हार्शली एंड विदाउट कंसिडरेशन। चेंज इनटू पैसिव, दे माइट बी रिवाइजिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका ऑप्शन भी करेक्ट होगा, द कॉन्स्टिट्यूशन माइट बी बीइंग रिवाइज्ड। चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, ही सेड आई और टू ओबे द लॉ। इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, फिल इन द ब्लैंक। सी एज ए पैंक कैन डैश क्लासिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। इसका ऑप्शन करेक्ट होगा ए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर अ पर्सन हु फाइल्स ए लॉ सूट और इनिशिएट्स लीगल प्रोसीडिंग्स इन ए कोर्ट ऑफ लॉ। इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसका ऑप्शन करेक्ट होगा बी, प्लेंटिफ। चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसमें करेक्ट सेंटेंस है बी, आइडेंटिफाई द एरर, ईच ऑफ द वर्डिक्ट्स हैव बीन चैलेंज्ड इन द कोर्ट। इसमें जो एरर है वो हैव है, इसमें होना चाहिए था आपका हैज़। चूज द सिनोनिम ऑफ लैकोनिक। इसका ऑप्शन करेक्ट होगा बी, कंसाइज। चूज द एंटोनिम ऑफ इंट्रांसिजेंट। इसका ऑप्शन करेक्ट होगा बी, फ्लेक्सिबल। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर अ लीगल राइट टू यूज अनदर्स लैंड फॉर स्पेसिफिक पर्पज। इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ईजमेंट। बी करेक्ट हो जाएगा, ईजमेंट। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वरी मोर डिलीजेंट, ही डैश द केस इजीली। इसमें सी करेक्ट होगा, वुड विन, फिल इन द ब्लैंक, हार्डली हैड द ट्रायल बिगन, डैश न्यू एविडेंस इमर्ज्ड। इसमें ऑप्शन करेक्ट होगा ए, वैन। चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस, समवन हैड स्टोलन द डॉक्यूमेंट्स हैड बीन स्टोलन। चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, ही सेड व्हाई आर यू लेट। इसमें ऑप्शन भी करेक्ट होगा, सी आस्क्ड व्हाई वाज लेट। चूज द करेक्ट प्रोपोजिशन, ही इज इंडिफरेंट डैश क्रिटिसिज्म। इसमें ऑप्शन यूज होगा ए, चूज द करेक्ट एडवर्ब, द लॉयर आर्ग्यूड। इसमें ऑप्शन करेक्ट होगा बी, वीमेंटली। चूज द करेक्ट नाउन फॉर्म ऑफ एब्सॉल्व। इसमें ऑप्शन करेक्ट होगा ए, चूज द सिनोनिम ऑफ इनक्वाइट। इसमें ऑप्शन करेक्ट होगा बी, चूज द एंटोनिम ऑफ कैप्रिसियस। इसमें ऑप्शन करेक्ट होगा सी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर अ पर्सन हु हैज द लीगल राइट टू इनहेरिट प्रॉपर्टी। इसमें ऑप्शन करेक्ट होगा बी, चूज द मीनिंग ऑफ द इडियम स्प्लिट हेयर्स। इसमें ऑप्शन करेक्ट होगा बी, फिल इन द ब्लैंक। सी इज oblivious dash the consequences of his actions। इसमें ऑप्शन करेक्ट होगा सी, चूज द करेक्ट पैसिव, दे आर alleged to have committed the offense। इसमें ऑप्शन करेक्ट होगा ए, चेंज इनटू डायरेक्ट स्पीच, ही सेड alas I have lost my case। इसमें ऑप्शन करेक्ट होगा बी, आइडेंटिफाई द एरर, द jury was divided in their opinions। इसमें ऑप्शन जो एरर है वो है डी, देयर। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, नो सूनर डैश द verdict announced that the crowd reacted violently। इसमें ऑप्शन ए करेक्ट होगा फर्स्ट। चूज द करेक्ट प्रोपोजिशन, ही हैज ए predilection dash criminal law। इसमें ऑप्शन करेक्ट होगा ए, फॉर। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। इसमें ऑप्शन भी करेक्ट होगा, आर्टिकल 15 द डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल। इसमें ऑप्शन करेक्ट होगा ए, विच रेट इज इशूड टू ट्रांसफर ए केस फ्रॉम लोअर कोर्ट टू हायर कोर्ट फॉर रिव्यू। इसमें ऑप्शन करेक्ट होगा सी, विच आर्टिकल डील्स विद द राइट टू प्रॉपर्टी एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल राइट। इसमें ऑप्शन करेक्ट होगा ए, विच लैंडमार्क केस प्रोपाउंडेड द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। इसमें ऑप्शन करेक्ट होगा ए, विच इंस्टीट्यूशन रेगुलेट्स मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया। इसमें ऑप्शन करेक्ट होगा बी, विच इंटरनेशनल ग्रुपिंग इंक्लूड इंडिया, यूएसए, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। इसमें ऑप्शन करेक्ट होगा सी, क्वाड। विच आर्टिकल प्रोवाइड्स द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसमें ऑप्शन सी करेक्ट होगा, व्हाट डज द लीगल टर्म रेस जुडिक्टा मीन। इसमें ऑप्शन करेक्ट होगा बी, विच आर्टिकल डील्स विद द पोजीशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इसमें ऑप्शन सी करेक्ट होगा, विच ऑर्गेनाइजेशन सेट्स ग्लोबल ट्रेड रूल्स।
इसमें ऑप्शन करेक्ट होगा सी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन which case expanded the interpretation of Article 21 to include procedure must be fair, just and reasonable. इसमें ऑप्शन ए करेक्ट होगा मनिका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया विच आर्टिकल डील्स विद द पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट टू इशू रिट्स. आर्टिकल 226 which economic term refers to the total value of goods and services produced within a country. इसमें ऑप्शन करेक्ट होगा बी जीडीपी which case related to reservation and promotions. इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा what does habeas corpus literally mean. इसमें ऑप्शन करेक्ट होगा बी which country has recently expanded its influence in the Indo-Pacific through AU-KU partnership. इसमें ऑप्शन सी करेक्ट होगा which article deals with the amendment procedure of the constitution. इसमें ऑप्शन सी करेक्ट होगा which body advises the president on matters of disqualification of MPs member of parliament. इसमें ऑप्शन बी करेक्ट होगा which principle is associated with no one should be a judge in his own case. इसमें ऑप्शन सी करेक्ट होगा which article of the constitution of India guarantees equality before law and equal protections of laws. इसमें ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी द doctrine of severability implies that. ऑप्शन बी करेक्ट होगा which it is preventive in nature and issued to stop a lower court from exceeding its jurisdiction. इसमें ऑप्शन सी करेक्ट होगा which article deals with the vice president of India. Article 63 which cases emphasize the concept of constitutional supremacy over parliamentary supremacy. इसमें ऑप्शन ए करेक्ट होगा which international organization is headquartered in Geneva and deals with global trade. इसमें ऑप्शन करेक्ट होगा सी 67 which article deals with the duties of the prime minister towards the president. इसमें ऑप्शन सी करेक्ट होगा which economic term refers to a sustained decline in economic activity for 2 consecutive quarters. इसमें ऑप्शन बी करेक्ट होगा which legal term refers to a formal written order issued by a court. इसमें ऑप्शन ए करेक्ट होगा which article deals with the power of parliament to legislate on state subject during national emergency. इसमें ऑप्शन बी करेक्ट होगा which case deal with the scope judicial review over constitutional amendments. इसमें ऑप्शन बी करेक्ट होगा which country is part of both G20 and BRICS groupings. इसमें ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ए ब्राज़ील विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर स्पेशल प्रोविजंस फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स. इसमें ऑप्शन करेक्ट होगा सी विच की इकोनॉमिक कंसेप्ट रेफर टू रिड्यूसिंग गवर्नमेंट डेफिसिट बाय कटिंग एक्सपेंडिचर. इसमें ऑप्शन करेक्ट होगा ए विच केसेस एसोसिएटेड विद द राइट टू प्राइवेसी एज ए फंडामेंटल राइट. इसमें ऑप्शन ए करेक्ट होगा विच आर्टिकल डील्स विद द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन्स. इसमें ऑप्शन ए करेक्ट होगा आर्टिकल 72 विच लीगल मैक्सिमम इन द थिंकिंग स्पीक्स फॉर इटसेल्फ. इसमें ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 77 का ऑप्शन करेक्ट होगा बी which organization monitors global health issues. इसमें ऑप्शन करेक्ट होगा सी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विच आर्टिकल डील्स विद द एक्सटेंशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन. इसमें ऑप्शन करेक्ट होगा बी लास्ट क्वेश्चन है जनरल नॉलेज से विच टर्म रेफर्स टू द पावर ऑफ द जुडिशरी डिक्लेयर लॉज अनकॉन्स्टिट्यूशनल. इसमें ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी जुडिशरी. 80 तक 41 से लेकर 80 तक आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरल नॉलेज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स करंट अफेयर. इनसे 81 से 100 तक जो क्वेश्चन है वो है रीजनिंग एंड इंटेलिजेंस से.